गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. द डे इज़ December 10th और आज मैं अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ इंडिया के लिए. आई हैव टू कैच अ ट्रेन टू शिकागो एंड शिकागो से फिर मेरी फ़्लाइट है. ऑलरेडी यहाँ पे बारिश हो रही है. यू सी द वेदर इज़ काइंड ऑफ ग्लूमी और बस ब्रेकफास्ट बनाना बाकी रह गया है. ब्रेकफास्ट बनाने के बाद आई विल हेड आउट टू द रेलवे स्टेशन एंड आई विल शो यू हाउ trains in US look like. There's a private train company called Amtrak which operates the train over here. I'll give you more details as we go ahead. So guys, stay tuned. मॉर्निंग दीप. मॉर्निंग ब्रो. कैसे हो भाई बहुत तगड़े हैं. आज तो इंडिया के लिए निकल रहे हैं. बहुत खुश लग रहे हो भाई बहुत खुश. 1.5 साल बाद ब्रो. सो वी हैव स्टार्टेड फॉर आवर जर्नी टू इंडिया एंड जाते जाते यहाँ पे एक बहुत ही फेमस बोबा टी और डोनट्स का कॉर्नर है. तो वहाँ से हम बोबा टी लेने वाले हैं. बोबा टी जिन लोग को नहीं पता उनके लिए बता दूँ, वो विदेशी फलूदा ही होता है पर आइस टी के फॉर्म में होता है. थाईलैंड का फेमस है सर बोलते हैं. तो थाईलैंड की कोई फेमस डिश है. ऑल इट्स वेरी पॉपुलर बट आई नेवर गॉट अ चांस टू ट्राई इट. सो आई एम गोइंग टू ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड स्टे ट्यून्ड. आई विल टेल यू हाउ दैट टेस्ट्स. इसमें से कौन सा चाहिए? Which one do you think is popular here? Popular? I would probably say mango. Mango? But basically all the fruit flavors. Any three of your choice. 3 my choice? Yes. My choice. Any boba flavors in there? Yeah. Okay, surprise us. For all of them? Yes. Gotcha. This one's Thai with peppermint. Thank you. It's running off on my hands. Oh, that's fine. Thank you very much. This strong. भाई क्या फ्लेवर है यार, क्या पी लिया. ये सारे फ्लेवर अच्छे हैं इसके. वाओ, ठीक है बोले. वेरी नाइस, एक्चुअली वेरी नाइस. अगर शिकागो कभी जाओगे ना, Excuse us. Excuse me. Chicago. Thank you. Hi. Here you go, guys. Right here up to the left. Are you going Chicago? Yes, Chicago. Okay, right here up to the left. Thank you. After we leave Sedalia, guys. I was gonna say you don't want to go into the car. Okay, we can take some of you down here. Thank you. Cool. Just mark your seat when you get up there. That's about you. So is the next coach gonna get empty? Yeah, they're gonna empty out the next coach. Alright, thank you. अभी टिकट चेकर आया, उसने हमको सीट पासेस बना के दिए हैं और उसने हमको बोला कि जो नेक्स्ट बोगी है वो अगले स्टेशन पे पूरा खाली हो जाएगा. सो आप वहाँ जाके बैठ सकते हो, विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि मैं और मेरा रूममेट हम अलग अलग बैठे हैं एंड थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है. सो नेक्स्ट स्टॉप पे विल सिट टुगेदर एंड विल हैव सम कॉन्वर्सेशंस. तो जर्नी वुड बी काइंड ऑफ लेस टैक्सिंग. काफ़ी लंबी जर्नी है, 10 घंटे में हम शिकागो पहुँच जाएंगे. सो आई विल कीप यू अपडेटेड. स्टे ट्यून्ड. तो फाइनली मेरी खुद की सीट मिल गई. पहले मैं किसी और के साथ शेयर्ड सीट पे बैठा था एंड दैट्स बिकॉज आज यहाँ पे अनयूजुअली ज़्यादा रश था. बहुत सारे लोग बेसिकली पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रेन दिखाने के लिए ट्रेन में लेके आए थे. इंडिया की तरह यहाँ पे ट्रेन इतनी कॉमन नहीं है क्योंकि फ़्लाइट्स आर वेरी अफोर्डेबल. सो पीपल जनरली प्रेफर flying to different places rather than taking trains. पर इंडिया में उल्टा होता है. ट्रेन्स ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम लोग लेते हैं और यहाँ पे थिंग्स आर डिफरेंट. सो इट बिकम्स एन एक्सपीरियंस ऑफ लेट्स से लाइफ टाइम. बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में सिर्फ एक या 2 बार ट्रेन से ट्रैवल करते हैं. शॉर्ट डिस्टेंसेस को
थोड़ी सी भी लंबी डिस्टेंस हो तो लोग फ्लाइट लेना प्रेफर करते हैं। तो अभी मेरी आधी जर्नी भी ख़त्म नहीं हुई है। आई ट्राई टू शो यू द ट्रेन अराउंड। रेस्ट टाइम रियली हैविंग अ गुड टाइम। स्टे ट्यून्ड। Do you have cream cheese bagels by chance? I do. Can I have 2 of them? 2 bagels? Yes. Okay, I think I That should only got 4 left, so that'll be right up your alley, right? Alrighty, it'll be $6. Anything else for you? That should be it. Okay, cash or card? Card. Okay, the machine is gonna light up. Once it lights up, follow the prompt using the black F key. Alrighty. Okay. Thank you so much. I No appreciate problem, that. No problem. Napkins are right in front of you. Cover it up as you're walking through and make it easy. Thank you so much. No problem. You have a good evening. You too. You need a little snack, huh? Yes. I understand. मैं रेस्टरूम जा रहा हूँ। So guys, बैठे बैठे भूख लग गई थी तो मैंने सोचा कि let me go and get something to eat from the pantry car, and I'll take this opportunity to show you how a pantry car looks like inside a train in the US. It's more like a tuck shop, like a canteen in the school, जहाँ पे आपको generally frozen खाना रहता है. They don't cook things. It's just they microwave and serve you. Prices are not very expensive. I mean the quality of the food is not great. It's just the packaged food. तो वो सीन है. Now let's go and check कि restroom कैसा दिखता है. ये दरवाज़ा बहुत ही अतरंगी तरह से ऑटोमेटिकली खुल गया. It's just one click thing. Just look at how clean this is. So Indian Railways has got a catch-up. और हम 10 घंटे से इस ट्रेन में हैं. अभी हमको पहुंचने में 2 घंटे और लगेंगे. अब इट्स बेसिकली 10 आवर्स जर्नी. देन आई एम गोइंग टू गो टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्लेस एंड प्लान ये है कि हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड for more videos, and if you have not subscribed to the channel, please consider subscribing, and if you like the video, please hit the like button. See you. Bye. So we just made our way out of the Chicago train station. हम लोग बाहर आ गए हैं और अब नेक्स्ट थिंग हमको ये करनी है कि हमको अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है जो यहाँ से 10-15 मिनट का ड्राइव है. और हमारे पास फ़्लाइट लेने से पहले एक और दिन है शिकागो में कल का, और हम फ़्लाइट लेंगे परसों. सो कल हम ट्राई करेंगे कि शिकागो घूमें और हम आपको घुमाएंगे. हमने 2 जगह सोच कर रखी है जहाँ पे हमको जाना है. सो विल गो देयर टुमारो एंड try to shoot some cool content. So stay tuned. Guys, I have a sad news. I was supposed to take my flight to India today. मेरी फ्लाइट का राउट था शिकागो से कनाडा, टोरंटो एयरपोर्ट, and from there all the way to New Delhi. लेकिन I was denied boarding just because I did not know that I needed a transit visa to land into Canada. And मैंने just travel agency से tickets book की थी, वो है ASAP tickets, and I was basically not informed about this. मतलब partly मेरी गलती है, मैंने research नहीं किया, मेरे को पता नहीं था ये, और as a result of this I was denied the entry.
और अब वो टिकट्स की कोई वैल्यू नहीं है, सो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन दैट टिकट. But not only that, I had to buy new tickets to India, which costed me close to $2,500. ठीक है यार, ऐसा हो जाता है कभी कभी. अभी हो गया हमारे साथ. हम एकदम सब, I mean, we are 3 people traveling to India, and all 3 of us are like very sad about this. हमारा प्लान था शिकागो घूमने का, और मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग करके आप लोग को शिकागो दिखाऊंगा, लेकिन मेरे को इतना मूड ख़राब हो गया था कि कुछ करने का मन नहीं किया. And now we are flying Air India tomorrow, 12 p.m. We have a direct flight. And now we'll land directly to New Delhi. Initially we were really hesitant of flying Air India because हमको लगता था कि क्या बेकार फ्लाइट है, थोड़ा लग्जरी में ट्रैवल करेंगे, we'll fly some better airlines. But अभी एक ऐसा लेसन मिल गया कि आज के बाद एयर इंडिया ही फ्लाई करना है हमेशा, directly from US mainland to India without any hops in any country. तो चलो ये था अभी तक का अपडेट. I'll see you tomorrow morning at the airport. Stay tuned.